Now we'll talk about gradients of biodiversity. What is this gradient means? If we look at the earth, तो earth एक जैसी नहीं है, it's not flat and it is not same all over. We see that latitudes जो हैं, है ना, जिसको आपकी बुक में given है latitudinal gradients. So we can see that there are gradients means somewhere it is more, the climate is different, या कोई चीज़ कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, कहीं पे कोई चीज़ कम हो सकती है. तो this is what gradient. तो uneven distribution of living organisms on the earth is what gradient. तो डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स एंड एरिया. यू कैन सी दैट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर ऑफ स्पीशीज, दीज आर डिफरेंट कलर्स, जिससे कि यहाँ पे ही बताया गया कि कितनी स्पीशीज कहाँ पे प्रेजेंट है. तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्लाइंस विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. तो यू शुड रिमेंबर कि जहाँ पे इक्वेटर है अर्थ पे, वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, एंड एज वी गो अप हायर एल्टीट्यूड पे हम जाते जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ मोर वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ठीक है. रिमेंबर ऑलवेज देयर इज मोर डाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देन इन द टेम्परेट फॉरेस्ट, which in turn have more diversity than in the polar regions. So diversity decreases as we move from equator to polar area. Example जो tropical forest का example है, it is Amazon rain forest in South America, lying mainly in the tropical region which has the greatest biodiversity on the earth. So you must be knowing the Amazon rain forests are also known as lungs of the earth because they have the maximum number of biodiversities. Now the question is कि why tropical regions are rich in biodiversity? What is, ऐसा क्या है वहाँ पे? तो there are certain reasons of richness of biodiversity in that region, tropical region में. अब वो क्या क्या है देखिए. Tropical regions are rich in biodiversity due to the following reasons. Maximum availability of sunlight. Equator है, equator पे सबसे ज़्यादा सीधी sun की rays fall करती हैं. So there is maximum availability of sunlight which leads to more photosynthesis, more production होगा, तो more plants are there, and if more plants are there, more animals will be there. So this is one condition. Second, constant climatic conditions. बहुत टाइम तक actually this जो ये जो region है बहुत टाइम तक discover नहीं हुआ होगा, तो there was no disturbance of the humans also there. So the climatic conditions were constant over there, and so the variety of all organisms is also more. Tropical regions are older, hence many species have evolved during the longer period of evolution. So one of the reason of rich diversity is that this region is very old, and so it got more time for evolution. Altitudinal gradient of biodiversity की बात करते हैं. तो decrease in biodiversity with an increase in altitude as we go on the heights. जैसे हम बात करें mountains की, तो mountains पे biodiversity will be less as compared to plains, and it is due to increase in temperature and increase in seasonal variability with increase in altitude. As you can see, foothills of Himalayas are rich in biodiversity than at the peaks. आप peaks पे देख सकते हैं there is no biodiversity, a very less biodiversity is there as compared to the foothills in the Himalayas. One species area relationship. We will talk about species area relationship. There is one scientist, Alexander von Humboldt. What he told, कि as more and more area is explored, as we see more and more area, so we get the more richness in the species. So this statement was given by him that as more and more area is explored, species richness increases. Species richness increases, that means number of species per unit area. The relationship is shown by, now there is a graph given in your book, you can refer to book also, page number 262, figure 15.2. There is one graph and one equation is given. So you should learn this equation and understand here. Log के base पे हम अगर देखें तो log s is equals to log c plus z log a. Now what is this? I will explain you. In this equation, s denotes species richness, a denotes area,
Z is for slope of the regression, अभी हम ग्राफ देखेंगे उसमें आप समझेंगे, and C is the y intercept. So these are the components of this equation, and the equation is log S equals to log C plus Z log A. How can we plot the graph? Graph देखेंगे. Now as the area is more and more area is explored, the species richness increases. ठीक है, species richness increases as more and more area is explored. So the graph which we get by this is the rectangular hyperbola. Rectangular hyperbola. You can see this blue line. This graph is in the shape of rectangular hyperbola, and this graph is showing what? Species area relationship, richness in species area relationship. And this graph can be denoted by this equation S equals to CAZ. और हम log के फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है, ग्राफ विल बिकम स्ट्रेट लाइन, एंड द इक्वेशन विल बिकम, ये s की जगह log s आ जाएगा, log c की जगह log c आ जाएगा, प्लस az के प्लेस पे z log a आ जाएगा. तो वी कैन राइट इन द log फॉर्म दिस इक्वेशन इन दिस वे. तो दिस इज द ग्राफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप ऑफ रिग्रेशन, जो हमने ग्राफ देखा उसका क्या सिग्निफिकेंस है? द स्लोप ऑफ रिग्रेशन, जो स्लोप बनाया हमने, स्लोप देखा, इट लाइज बिटवीन, इसकी वैल्यू नॉर्मल कंडीशंस में 0.1 से 0.2 के बीच में लाई करेगी. तो इट लाइज बिटवीन दिस एंड हैज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस इन ऑर्डर टू फाइंड अ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. दैट मीन्स कितने एरिया में कितनी स्पीशीज हैं ये पता लगाने के लिए वी कैन यूज दिस ग्राफ. It is found that in smaller areas where species area relationship is analyzed, the value of slopes of regression is similar regardless of the taxonomic groups or the regions. So it is found that smaller अगर area होंगे तो value of slope of regression is similar. Now let us mark few lines in the book also. How many species are there on earth and how many in India? Okay, you should read the book also properly, and I will be giving you important lines and we will be writing some important questions also. So before we proceed ahead, हम कुछ questions भी mark कर लेते हैं. Come on page number, फर्स्ट पेज पे आते हैं हम चैप्टर के. Genetic diversity. Write down one question here. Name the type of biodiversity represented by 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. So you have to name the type of diversity. So answer will be what? Answer will be genetic diversity. Okay. Now come on the next page. Latitudinal biodiversity की बात करेंगे हम. You should remember this pie chart also. The question may come in the form like कि यहाँ पे A लिख दें, यहाँ B is given, C. तो you should know कि which part of the graph is representing which kind of animal. Now come on this page, page number 261, and in front of latitudinal gradients, write down one question. Which region of the earth has the greatest biodiversity on the earth? Which region on the earth has the greatest biodiversity on the earth? Now we will mark some important lines in this topic, that is species area relationship. Like you should know the name of the scientist, that is Alexander von Humboldt observed that within a region species richness increased with the increasing explored area. So this is the statement given by Alexander von Humboldt. But only up to a limit. In fact, the relationship species richness and area of a wide variety
taxa like angiosperm plants, birds and bats, freshwater fishes turn out to be a rectangular hyperbola. So you can see this graph is rectangular hyperbola and equation which is represented as S equals to CA Z, CA की power Z. On a logarithm scale we can write this equation in this form, log S equals to log C plus log A, Z log A, where species richness is represented by S, A is area, Z is slope of the line and C is Y intercept. And as I explained you, जो range है that Z की value it lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group of the region. Then other ranges are also there. Like एक तो वैल्यू ये हो गई, बट इफ यू एनालाइज द स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप वेरी लार्ज एरियाज, इफ यू इंक्रीज द एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स, तो यू विल फाइंड दैट द स्लोप ऑफ द लाइन which is much steeper and the value of Z ranges from 0.6 to 1.2. तो ये इस तरह से चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस क्या होते हैं बच्चों? फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड द मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. अब हम और हाई रेंज पे आ गए हैं, दैट इज कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं. द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15. तो ये जो स्लोप के नीचे का एरिया है ये इंक्रीज होता रहता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. नाउ इफ वी सी व्हाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ सो मच बायोडाइवर्सिटी. इतनी सारी स्पीशीज की ज़रूरत कहाँ है? 8-10 स्पीशीज भी होती हैं तो भी काम चल जाता, बट नो, इन नेचर सो मच वेराइटी, जितनी वेराइटी होगी, जितना वेरिएशंस होगा, स्पीशीज को सर्वाइवल में उतना ही एडवांटेज मिलेगा. So that does the number of species of different varieties really matter to the functioning of the ecosystem? So is it required? तो question का आंसर क्या होगा? Yes. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable. जहाँ ज़्यादा species होंगी, stability ज़्यादा होगी than those with lesser species. So what exactly is the stability for a biological community? कैसे species में stability आएगी? तो a stable community should not show too much variation. एक तो variation ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? Then next thing that productivity from year to year it must either resistant or resilient to occasional disturbance. ठीक है? There should be no disturbance and there should be not should be too much variation. अब एक टॉपिक आता है डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए इन्होंने. ही पुट सम प्लॉट्स, ऐसे स्क्वायर प्लॉट्स लेकर उन्होंने कुछ आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स किए एंड प्रपोज्ड हिज थ्योरी दैट Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variations. जहाँ पे species ज़्यादा थी वहाँ पे variations कम थे in total biomass. And he also showed that in his experiments increased diversity contributed to higher productivity. Diversity ज़्यादा होगी तो productivity भी ज़्यादा होगी, ठीक है. Now we may not understood, मतलब completely हम species की richness के बारे में, सब सारी species का क्या contribution है वो हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, but it is important for the survival of all the species. And if any one species gets extinct, कोई एक species extinct भी हो जाएगी तो it will affect the whole ecosystem. सारे species पे, सारे biodiversity पे उसका effect पड़ता है. तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दीज? अगर कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं. वी विल टेक वन हाइपोथेसिस, वी विल अंडरस्टैंड वन हाइपोथेसिस, ठीक है. उसका हाइपोथेसिस कौन सा है? वो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, दिस वाज explained by Stanford ecologist Paul Ehrlich. इन्होंने क्या बताया
कि सपोज जैसे एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके, है ना, सपोज जो उसमें पैसेंजर्स बैठे हैं, इफ़ दे स्टार्ट टेकिंग आउट वन पार्ट, वन बाय वन एक एक पार्ट को अगर उसको रिमूव करते रहें, तो सपोज इफ़ वन पार्ट इज़ टेकन आउट, हो सकता है कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इफ़ वन बाय वन ऑल द पैसेंजर्स या मेनी पैसेंजर्स स्टार्ट टेकिंग आउट इट्स पार्ट्स, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके जो भी वो उन पार्ट्स का जो भी फंक्शन होगा वो ख़त्म हो जाएगा एंड द प्लेन में फॉल डाउन या उसकी फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। तो ऑन दिस बेसिस इस एग्जाम्पल को लेते हुए उन्होंने बताया, जैसे इन एन एयरप्लेन इकोसिस्टम, एयरप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर किया, ऑल पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, तो रिवेट्स क्या है, एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, एंड वी आर कंपेयरिंग स्पीशीज विद रिवेट्स, तो स्पीशीज ये मान लीजिए रिवेट्स हैं। इफ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम कॉजिंग अ स्पीशीज, तो अगर यहाँ पे हम रिवेट को रिमूव करने को कंपेयर कर रहे हैं स्पीशीज को रिमूव करने से, ठीक है, तो इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, स्टार्टिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड the plane becomes dangerously weak over a period of time. Furthermore, which rivet is removed may also be critical. अगर कोई बहुत important member को हमने remove कर दिया है, बहुत important rivet को remove कर दिया है, तो it will lead to more loss. तो loss of rivets on the wings, key species that drive major ecosystem functions, वो species जो सबसे ज़्यादा important ecosystem functions को control कर रही हैं, तो it can become a serious threat to the flight safety, then loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. तो here ecosystem को airplane से compare किया। So children, we can estimate, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि how important is the biodiversity and how important is the each and every species for us also and for every living organism. Now we'll see what is the loss of biodiversity. तो loss of biodiversity means कि हम biodiversity में से या पूरा जो species की richness है उसमें से अगर कुछ species को remove कर दें या कुछ species अगर extinct हो जाती हैं, तो what will be the effect of them on the earth, पूरे ecosystem पे उसका क्या effect पड़ेगा ये हम समझेंगे। तो first of all, what is loss of biodiversity? So it is doubtful if any new species are being added through speciations into the earth's treasury. Suppose new species add भी होती रहती हैं, तो there is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly. So it has been noticed, it has been found that species धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, तो जो biodiversity है वो decline हो रही है, that means loss of biodiversity is taking place. Or who is responsible for this? Of course, human activities. तो our activities are responsible for the loss of biodiversity. तो इसलिए अभी तक हम ये सोच सकते हैं, we can estimate कि around 2000 species extinct हो चुकी हैं, ठीक है। तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट किया है उन्होंने इन 2004, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्स बनाया जिसमें एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज़ के बारे में बताया है, इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं, लाइक डोडो, है ना, हम जनरल नॉलेज में पढ़ते हैं कई बार, क्वेगा विच इज फाउंड इन अफ्रीका, थाइलसाइन ऑस्ट्रेलिया, स्टिलर सी काउ इन रशिया एंड 3 subspecies बाली, ज्वान एंड कैस्पियन ऑफ द टाइगर। सो वी कैन see that so many species have become extinct because of us only. The last 20 years alone have witnessed disappearance of 27 species. तो अभी recently 20 years में ही हमने 27 species को लॉस किया है। Now if we carefully analyze the records, it shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibians, मतलब हर species extinction के उस पे नहीं है, but some species are more vulnerable for extinction, like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Amphibians को ज़्यादा chances हैं कि वो extinct हो सकते हैं, ठीक है।
So you will mark this line and write one question on the page number 263. ठीक है, write down one question on page number 263. What is Rivet-Popper hypothesis? What is Rivet-Popper hypothesis? ठीक है, and one more question on the first paragraph. Stability of a community depend on its species richness. Write how David Tillman showed this experimentally. So you have to mark this line. जहाँ पे टिलमैन का एक्सपेरिमेंट गिवन है, ठीक है, ऑन फर्स्ट पैराग्राफ. These lines you can mark. David Tillman's long-term experiments using outdoor plots. So Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. And he also showed that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. So this is what was done by Tillman. ठीक है, so these were the two questions. Now come to page number 264. So we have just talked about the various species which have become extinct. So we were talking about IUCN and also careful analysis of records shows that extinction across taxa are not random. तो कहीं से भी extinction होता हो ऐसा नहीं है. Mostly some species are more vulnerable to extinction. So adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing threat of extinction. So this much species have the threat of extinction. Presently, ये सब data हमदा you should remember this. 12% of all bird species, 23% of all mammal species, and 32% of all amphibian species, and 31% of all gymnosperm species in the world are facing the threat of extinction. तो ये कुछ data है. Now we can see during the long period more than 3 billion since the origin and diversification of life on the earth there are 5 episodes of mass extinction. है ना, इन पे भी इस पे भी क्वेश्चन आता है. तो अभी तक 5 times mass extinction हो चुका है. Now we are moving towards the 6th extinction. So how is the 6th extinction presently in progress different from the previous episodes? So as we are telling अभी 5 तो हो चुके हैं and we are running to the 6th. So what do you think who is responsible for the 6th episode of this extinction? So of course human beings. Okay. तो how तो different क्या है, difference क्या है? पहले तो natural calamities की वजह से extinction हो गया होगा, but 6th extinction is due to human beings. The difference in the rate. अब डिफरेंस रेट में भी डिफरेंस है. अभी जो एक्सटिंक्शन हो रहा है वो बहुत फास्ट स्पीड से हो रहा है. इट इज एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन द प्रीवियस एक्सटिंक्शन एंड प्री ह्यूमन टाइम्स, एंड आवर एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फास्टर रेट्स. तो व्हाट वी आर डूइंग, वॉट एवर टेक्नोलॉजीज वी हैव डेवलप्ड, तो ड्यू टू दैट एक्सटिंक्शन इज मोर फास्टर. तो इकोलॉजिस्ट क्या है, वॉर्न करते हैं कि इफ यही स्पीड रही nearly half of all the species of the earth would be wiped off, मतलब वो remove हो जाएंगी within the next 100 years. So we should be careful and we should be aware कि how can we prevent the loss of biodiversity. In general हम बात करें तो loss of biodiversity in a region क्या क्या problem हो सकती हैं, what may be the general loss of biodiversity. तो we can see डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन. अगर कोई बायोडाइवर्सिटी लूज होती है, इफ बायोडाइवर्सिटी इज लॉस्ट, तो देयर विल बी डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूर्बेशन. देन थर्ड इज, दिस इज फर्स्ट. सेकेंड एनवायरमेंटल पर्ट्यूर्बेशन सच एज ड्रॉट. ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इंक्रीज्ड वेराइटी इन सर्टेन इकोसिस्टम पजेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी,
water use and pest and disease cycles. So, these are the different losses of biodiversity.